The value of time. Exercise question answer. Question number 1. How had Tasir wasted his time before he visited his grandfather? He had wasted his time in playing video games, chatting with friends and daydreaming. Question number 2. In what way did the poor time management affect Tasir performance? The poor time management affect Tasir performance, his assignments and other school tasks badly. Question number 3. How did Tasir fill the jar? He poured the sand first, then the pebbles, and lastly tried to add the rocks, but they didn't fit. Question number 4. Why did his grandfather decide to help Tasir? He noticed Tasir struggling with time management and wanted to teach time a valuable lesson. Question number 5. What is the impact of accurate time management on Tasir performance? The Tasir improved his grades, became less stressed and managed his time effectively for important tasks and relationships. Vocabulary. Explain the meaning of the highlighted words given below. नीचे दिए गए नुमाया अल्फाज के मानी की वजाहत करें. Tasir often found himself procrastinating to delay the tasks. He decided to impart a valuable lesson. Impart meaning teach. Tasir eagerly began by pouring the sands into the jar, followed by the pebbles. Eagerly means willingly. His classmates listened intently means devotedly, and many of them decided to try the same approach themselves. Approach means go towards. With practice and determination, he started to see improvements. Determination, firm attitude. Tasir's newfound time management skills had a positive impact on his relationship also. Impact means effect. नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरस. देखें. कंसल्ट द थ्योरस एंड फाइंड द सिनोनिम ऑफ दीज वर्ड्स. यूज देम इन योर सेंटेंस. और अल्फाज के मुतरादाफात को तलाश करें, उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें. इंग्रूस्ड का सिनोनिम है अब्जॉर्ब, जज़ब करना. कैप्टिवेटेड, इमर्स्ड, रिवेटेड. सेंटेंस है शी वॉज इंग्रूस्ड इन हर स्टडी दैट शी डिडंट नोटिस द time passing. Admirable, praiseworthy, commendable, exemplary, worthy. His admirable efforts in raising awareness of climate change earned him an award. Frowned, synonym scowled, glowed, grimaced, putted. She frowned when she realized she had missed her school. Amazement, synonym astonishment, wonder, awe, surprise. The audience watched in amazement as the acrobat performed an incredible stunt. Allocated, synonym assigned, distributed, designated, apportioned. The manager allocated the conference from the important meeting. Impact, synonym influence, effect, consequences, result. The new policy had positive impact on employees' morale. Cherished, synonym valued, adored, beloved. The old photograph was a cherished memory from her childhood. Use a dictionary to change the following nouns to adjective. The first one is done for you. The ज़ैल अस्मा को इसमें में तब्दील करने के लिए डिक्शनरी इस्तेमाल करें. पहला आपके लिए कर दिया गया है. मैनेजमेंट, स्ट्रगल, ग्रेटिफिकेशन, एक्सप्रेशन, रिएक्शन, प्रेजेंस, लेसन, प्रोग्रेस. मैनेजमेंट, मैनेजरियल, स्ट्रगल, स्ट्रगलिंग, ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफाइंग. एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिव, रिएक्शन, रिएक्टिव, प्रेजेंस, प्रेजेंट, लेसन, लेसन, प्रोग्रेस, प्रोग्रेसिव. ग्रामर पोर्शन है हमारा कंजक्शन. व्हाट इज कंजक्शन? अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टुगेदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस टू मेक देम मोर कम्पैक्ट. हरफ अतफ एक लफ्ज़ है जो अल्फाज मुरक्कब, नाकिस या मुरक्कब ताम को ज़्यादा मरबूत बनाने के लिए जोड़ता है. देर आर मैनी कंजक्शंस इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश में बहुत से हरूफ अतफ हैं. बट द मेन 3 टाइप्स आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजक्शंस. 2 बड़ी अकसाम को ऑर्डिनेटिंग एंड सब ऑर्डिनेटिंग हरूफ अतफ और कोरिलेटिव हरूफ
अतफ हैं, कोरेलेटिव हरूफ अतफ हैं। एग्जाम्पल, ज़ारा एंड आई विजिटेड मरी लास्ट वीकेंड। गुज़श्ता हफ्ते ज़ारा और मैं मरी की सैर के लिए गए। एंड क्या है हमारे पास? कंजक्शंस, ये दो लोगों को आपस में जोड़ रहा है। डू यू हैव अ रफ नोटबुक और अ रफ शीट ऑफ पेपर? क्या आपके पास रफ नोटबुक या रफ कागजी शीट है? आई डिड नॉट गो टू वर्क टूडे बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। मैं आज काम पर नहीं गया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। She did not like the food but she ate it anyhow. मैं उसको खाना पसंद नहीं आया फिर भी उसने खा लिया, लेकिन फिर भी उसने खा लिया। I will be leaving tomorrow. मैं कल रवाना हो जाऊंगा। So I am trying to finish all the pending assignments. इसलिए मैं अपने तमाम काम ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास एंड कंजक्शन था, सेकंड में और, थर्ड में बिकॉज, फोर्थ में बट एंड फिफ्थ में सो। Clauses of conjunctions. Conjunctions are categories into three clauses. हरूफ अतफ 3 दर्जों में तकसीम किए जाते हैं। Coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions join together clauses of equal ranks. The chief coordinating conjunctions are for and. These 7 coordinating conjunctions can be remembered by using the acronym FANBOYS. FANBOYS mean for, F means for, A mean and, N means nor, B mean but, O mean or, Y mean yet and S mean so. So ये हमारे पास coordinating conjunctions हैं फैन बॉयज। फैन बॉय वर्ड को याद करके हम coordinating conjunctions के वर्ड्स को आसानी से याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। परिंदे उड़ते और मछलियाँ तैरती हैं। द सेंटेंसेस contains two independent statements or two statements of equal rank or importance. Hence the conjunctions joining together these two statements or clauses of equal rank is called coordinating conjunction. Subordinating conjunctions. A subordinating conjunctions join an independent clause to a dependent clause. मातहत हरूफ अतफ आज़ाद मुरक्कब ताम को मातहत मुरक्कब ताम से जोड़ता है। The chief subordinating conjunctions are after, because, if, that, though, although, till, before, unless, as, when, where, while, etc. Example, he ran away because he was afraid. वो दौड़ा क्योंकि वो डरा हुआ था। Because हमारे पास क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास है कोरेलेटिव कंजक्शंस। दीज आर अ काइंड ऑफ टैग टीम कंजक्शंस। दे कम इन पेयर्स एंड दे आर यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। कोरेलेटिव कंजक्शंस इंक्लूड आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और, नॉट बट, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स, I want either an apple or an orange. Akram likes neither tea nor coffee. Fill in the blanks with appropriate coordinating conjunctions. खाली जगह को मुनासिब coordinating हरूफ अतफ से पुर करें। I wanted to go for a walk but it started raining. She likes both burgers and pizza. You can have a nihari or pasta but not both. He studied hard so he could pass the exams. They were tried yet kept working. Fill in the blanks with appropriate subordinating and correlative conjunctions. He didn't submit the homework dash he wasted time in playing games because she likes either tea or juice in the morning. Kiran did not pass the exams because she had not studied well. Dash he was tried, he stayed up late to finish his work, though he was tried. Number 5, although you work hard, yet you wouldn't complete the test. He is both intelligent and hard working. ट्रांजिशन वर्ड्स डिवाइसेस हमारे पास क्या होते हैं? ट्रांजिशन वर्ड्स आर द वर्ड्स फॉर द फ्रेजेस दैट कंटेंट्स आइडिया विद इन सेंटेंसेस। ये वो अल्फाज हैं जो फ़िक्रे, पैराग्राफ या तहरीर के हिस्सों में मौजूद अल्फाज या मरकब नाक़िस को जोड़ते हैं। इनके दरमियान बाहमी ताल्लुक़ कायम करने में मदद भी देते हैं। दे हेल्प टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स टू द टेक्स्ट, मेकिंग द राइटिंग मोर कोहेसिव एंड ऑर्गेनाइज्ड।
वो मतन के मुख्तलिफ हिस्सों के तहरीर को ज़्यादा मरबूत और मुनज़्ज़म बनाते हुए दरमियान बाहमी ताल्लुक़ कायम करने में मदद देते हैं। Examples of transition words are phrases, devices. He loves cooking. Additionally हमारे पास क्या है? Transition words. ऐसे अल्फाज जो पैराग्राफ के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद जो अल्फाज हैं उनके मरकब नाक़िस को जोड़ते हैं, उनको हम ट्रांजिशन कहते हैं। अब हमारे पास ये 2 सेंटेंसेस हैं। ही लव्स कुकिंग एडिशनली वर्ड्स क्या है? ट्रांजिशन वर्ड्स है। फर्दर मोर शी एक्सप्लेन द मेन पॉइंट्स इन डिटेल। फर्दर मोर, इन एडिशन, ये भी हमारे पास ट्रांजिशन वर्ड्स है, डिवाइसेस है। शी एंजॉयड द बुक लाइकवाइज भी हमारे पास ट्रांजिशन वर्ड है। द वेदर वॉज बैड देयरफॉर द फ्लाइट वॉज डिलेड। मोर एवर ही was responsible for organizing the event. Moreover, she loves to travel. Consequently, she saves money. He studied hard. As a result, he passed the exams. On the other hand, some people preferred cold weather to hot weather. She loves reading. It contrasts her sister prefer hiking. Fill in the blanks with appropriate conjunctions and but or so to complete each sentence correctly. She likes tea or coffee. He went to the store and bought some milk. He played outside but started raining. It was late, so they decided to leave early. She enjoys reading novels but watching videos lectures he is not He enjoys reading novels and watching videos lectures. He is not tall but short. They will visit museum and the zoo. Use these transition words in your own sentences. Moreover, meanwhile, therefore, in addition, furthermore. Moreover, she is a talented musician. Moreover, she excels in multiple languages. Meanwhile, the kids were playing outside. Meanwhile, their parents were preparing dinner. Therefore, it was raining heavily. Therefore, the match was postponed. In addition, he speaks French fluently. In addition, he is also learning Spanish. Furthermore, the project is behind schedule. Furthermore, the budget has been exceeded. Rewrite each sentences using a different conjunctions to convey a similar meaning. एक जैसे मानी बयान करने के लिए हर जुमले को मुख्तलिफ हरूफ अतफ का इस्तेमाल करते हुए दोबारा लिखें. He will go to the beach if the weather is nice. Rewrite, he will go to the beach provided that the weather is nice. She likes coffee but she doesn't like tea. She likes coffee as she doesn't like tea. They went for a walk because the weather was nice. They went for a walk as the weather was nice. He not only studies but also plays. He studies as well as plays. They went skiing since there was fresh snow on the slopes. They went skiing as there was fresh snow on the slopes. He is both talented musician and skilled painter. He is a talented musician and skilled painter.